students, so here I am with the first chapter of your class 12, that is electrostatics. Now what this electrostatics is? This electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charges at rest, forces between the charges, electric field and the potential due to charges. मतलब यहाँ पर क्या है कि हम चार्ज जो है जो रेस्ट में है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो चार्जेस रेस्ट में है उनके बीच में फोर्सेस, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल वो क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर. नाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it is also called as static electricity. Why static electricity? Because we will deal with the electrons which are always in rest. That is why static electricity. Now we can call it by another name, that is frictional electricity. अब इसको frictional electricity क्यों बोलते हैं? Like friction. In case of friction, here we are creating energy in which we are taking out the electrons from a body. Means friction is the cause by which we can charge a body. That's why this is also called as frictional electricity. That is the method by which we can create charges. Okay, now here in the electrostatics in class 12th, it is divided into two chapters. The first chapter is electric charges and fields. जो अपन ने यहाँ पर देखा कि अपन charges के बारे में, क्योंकि रेस्ट में उसके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बीच में फोर्सेस और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 2, उसके अंदर अपन उसके पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ हियर इन दिस फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज समथिंग possessed by the material object that makes it possible for them to exert electrical forces and to respond to electrical forces. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट होता है. इट इज समथिंग, मतलब हमने क्या कहा इसको, हमने कह दिया कि ये ऐसी कुछ, इट इज समथिंग, ये ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, या तो फिर एक जो चार्ज है वो उस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से उसके रिएक्ट करता है या फिर रेस्पॉन्ड करता है. अब ये चार्ज आता कहाँ से? सबसे पहली बात कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं कि अपने पास कोई भी दो पार्टिकल्स होते हैं, उन दोनों पार्टिकल्स का अगर मास है तो उसके बीच में हमेशा एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो लेट अस टेक टू पार्टिकल्स, दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स. वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द forces between the gravitational force between the two electrons. Now here we have one electron and the other electron, they are separated by a distance of 1 centimeter. Now we have formula F equals to G mm by R square. Value of G and the mass of electron, that is 9.1 × 10⁻31. We have two electrons, that will be square m1 m2 by R square, that is the distance is 1 centimeter. Now when we will solve this, then we will get the force F is equals to 5.5 into 10⁻67 Newton. No need to see this magnitude, just see the order, that is 10⁻⁻67. ये कितना कम होता है. अब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पास में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, तब ये देखा गया कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. बिकॉज हियर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, बट जब दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रैक्टिकली पास में रखा गया वो दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं हुए. अगर वो अट्रैक्ट होते तो अपन क्या कह सकते थे कि यहाँ दोनों के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट दे आर रिपेलिंग ईच अदर. सो दैट वी कैन से कि अदर देन मास, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से वो वहां पर रिपेल कर रहे हैं. और रिपेल जब कितने मैग्नीट्यूड से वो रिपेल हुआ, जब कैलकुलेट किया गया तो वो होता है the order of 10⁻⁻24. Now here you can see this 10⁻⁻24 is very large quantity as compared to 10⁻⁻67. मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये ज्यादा इफेक्टिव था एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स. अब यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास मास के अलावा एक ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज चार्ज. तो चार्ज इज सिंपली अ property. So the additional property of electron other than mass which gives rise to electrical force between the two electrons, that is called as the charge. Okay, now we have one property of charge, that is called as polarity. Polarity वो property होती है चार्ज की जिसकी वजह से अपन different types of charges को अलग अलग बता सकते हैं. Like we have two different kind of charges, positive charge and negative charge. ये नाम कुछ ऐसा
कुछ सोच के नहीं दिया गया, सिर्फ बोल दिया गया कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, एक को नाम दे दिया पॉजिटिव, एक को नाम दे दिया नेगेटिव, बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर। स्टार्टिंग में अपन ने जो उसको नाम दे दिया वही चलता हुआ आ रहा है, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दीज नेम्स वेर गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। Okay, now here the next topic here we will see is the origin of electrical charges. We will see the origin of electrical charges. Now charges यहाँ पर actually develop कैसे हो रहे हैं? हम यहाँ कह सकते हैं कि whatever the charges are being developed on any object, that is because of charge imbalance. वहां पर एक क्या होता है, चार्ज का इम्बैलेंस होता है, कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर, लेट्स अज्यूम वी हैव one object, that is object A, and we have another object that is called as object B. Okay, now here what we will do, we will rub these two objects, or we can say we will try to create some charges because of friction. जब इन दोनों bodies को हम rub करेंगे तो क्या होगा, we have one term that is called as ionization energy. Now this ionization energy, in case of physics we can say it is known as work function, means the energy required to take out the electron from any material or from any atom, that is called as work function. The same in the chemistry you will see the name as ionization energy. अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है एक की ionization energy कम होगी, एक की ज्यादा होगी. Let us assume this, for that object A, ionization energy for object A is less than ionization energy of object B. इसकी ionization energy कम है, इसकी ionization energy ज्यादा है. इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी बाहर निकल सकते हैं, और जैसे हम इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, व्हाट विल हैपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, दे विल मूव ऑन दी अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द वर्क फंक्शन, और यू कैन सी बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी. अब क्या हुआ, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल गए तो we have one property of charge. What is that property of charge? Property of charge is the conservation of charge. Means यहाँ पर एक जितने एक सिस्टम के अंदर हमेशा जो चार्जेस हैं that will always remains conserved. मतलब जितने आप नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर रहे हो उतने ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होंगे. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हुए उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी डेवलप हो जाएंगे. अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बी है, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज and this you can say it to be positively charged. अब यहां से कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगी. एंड वी कैन से वन मोर प्रॉपर्टी हियर दैट द whenever there is excess of electrons, wherever there is excess of electrons, मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, that particular body will be negatively charged, and wherever there will be deficiency of electrons, that will be positively charged. मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, that particular body will be positively charged. Okay, that is how we can charge two bodies negatively or positively. Now here one question arises that why there is only transfer of electrons for the charging process, कि हमेशा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर क्यों होता है. Now here we have first reason. That first reason we have already seen here. The first is the work function. हम यहाँ पर चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि वहां से अगर प्रोटॉन निकलेगा तो जहां पर प्रोटॉन जाएंगे दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और जहां से निकलेंगे अपन कह सकते हैं उसको नेगेटिवली चार्ज. बट द मेन क्वेश्चन इज ऑफ वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन मतलब अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है दैट ऑलवेज लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज वेरी वेरी हाई. मीन्स टू टेक आउट प्रोटॉन it requires high work function. That's why we cannot take out proton to charge a body. This is the first reason. Now the second reason is the mass. That is, we can say a proton is 1837 times heavier than an electron. Now you can assume if the electron is one times you can take any unit. If you are taking it to be 1 unit of mass for an electron, then for a proton its mass is 1837. So you can say it's not easier to take out this proton. Otherwise, अगर ये पॉसिबल होता तो हम कह सकते थे कि वहां पर प्रोटॉन के निकलने से भी कोई बॉडी चार्ज हो सकती है. बट व्हाई ओनली देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ द वर्क फंक्शन एंड सेकंड रीजन इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. ओके.